Hello, good evening. Good evening, boys and girls. Good evening, Vivek. Give me the clearance, please. Am I audible and visible, boys and girls? Namaste, Satyan Singh. Okay, very good. So, very good evening to all of you. Welcome to PW platform, Gate Wallah segment. This is Khalil Khan here, welcoming you to on board operating system fast crash course. And we are in the discussion of the module called file system. तो आज हमारा लास्ट सेशन है of this fast track course with regard to the subject operating system. Yes, good evening आरती. तो देखिएगा बच्चों, आज का जो टॉपिक है फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने देखा था फाइल सिस्टम इंटरफेस और स्टोरेज स्ट्रक्चर, जहां पर हमने फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ डिस्क देखी थी एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क आल्सो, फॉर्मेटिंग प्रोसेस। तो वहां से आज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू टेक अप एंड दैट इज नथिंग बट द एलोकेशन मेथड्स। तो हमारा मेन फोकस होगा आज की क्लास का एलोकेशन मेथड्स, डिस्क स्पेस और फाइल एलोकेशन मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। So recollecting the discussion from the last class, so let me write the title here. File allocation methods. ठीक है। So let's take a conceptual understanding of a partition. Is our partition. ये जो partition है, this will be divided into parts, fields, different fields. The first field is called PCB, partition control block. Then we have boot control block. पिछली क्लास में हमने देखा था। Next we have directory structure. ठीक है। लास्ट में जो पोर्शन है वो है डेटा ब्लॉक्स which will have to be allocated to the files. जो ब्लॉक आप फाइल को allocate करोगे वो ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है। Now every disk block, so let's say this is a disk block. This is a disk block. Every disk block will have a disk block address and its size as disk block size. So this is disk block size. And this disk block address. Generally, address is measured in bits and this size is given in bytes. Disk block size in bytes. Good evening. ठीक है? Like you can say the block address is X and some block size may be some K bytes. Then based on these parameters DB and DBS, we can find an important metric, an important parameter that is called maximum possible disk size.
ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्क साइज. So that will be number of blocks possible, which will be 2 power dBA. Number of blocks, size of each block is dBs. So this is the parameter, this is the formula that will give you the maximum possible disk size in bytes. 2 power dBA is number of blocks, size of each block is dBs. तो जब आप multiply करोगे number of blocks with block size, you will get total disk size maximum possible, and this invariably will also be equal to maximum possible file size. Maximum possible file size. So remember this as a concept. So generally block numbers are assigned from 0 starting, maybe this 0, 1, 2, 3, something like this. So now the question is, if I want to store some file, let's say file has got some Z bytes and this block size is, say for example, K bytes. So if you want to store this file on the disk in the form of blocks, anything which is stored on disk, जो भी आप store करोगे disk पर, वो block number of blocks में store होगी, one or more blocks. तो ये file जो है Z bytes की, if you want to store it on disk of in terms of blocks of size K bytes, तो आपने पता करना है how many blocks are needed. So कैसे निकालोगे आप? Number of blocks needed will be nothing but file size divided by block size. So this will give you the number of blocks which are needed to store the file. तो अब यहां पर हमें डिसाइड करना होगा how are we going to allocate these blocks. 10 blocks है या 5 blocks है या 8 blocks है, जो blocks है कैसे allocate करेंगे और कौन से allocate करेंगे? Those are called allocation methods. File allocation methods. Methods for allocating the blocks to the file, methods for allocating the disk blocks to the file. So boys and girls, there are 3 methods. One is called contiguous, the other is called non-contiguous or linked allocation, and the third is a combination of these two, that is called indexed allocation. 3 allocation methods. चलिए quickly देखेंगे one by one each of these allocation methods and try to build up understanding. फिर उसके बाद कुछ problem solving भी देखेंगे. चलिए, so बच्चों यहाँ पर देखिएगा, this is the first allocation method, that is called contiguous allocation. So this is contiguous allocation. Contiguous allocation. The first allocation method. मतलब the blocks which you are going to allocate, are contiguous blocks. That is the meaning. उसका example यहाँ देख सकते हो आप. This is my disk. These are the blocks. There is a file by name count. Look at this. Starting address is 0. 2 blocks are in use. मतलब 0 and 1. There is a file by name tr. Starting is 14. 3 blocks are in use. 14, 15, 16. Like that. Other files. This is contiguous allocation. So contiguous blocks will be in use by the file. Then what are the issues? Performance issues of contiguous allocation. Issues अगर हम यहाँ पे बात करें, in terms of fragmentation, number 1, internal fragmentation. Can it have internal fragmentation? Yes, the last block may not be fully utilized. जो last block in use है file के, हो सकता है कि you will not be fully utilizing it. तो last block में जितनी भी space छूट जाएगी, बच जाएगी, that will be treated as internal fragmentation. क्या is there any scope of having external fragmentation in this policy? Is there any possibility? हाँ, यहाँ पर हो सकती है. I have 2 free blocks here, 2 here, 3 here, something like that. So if I have free blocks distributed across the disk, but they are not large enough to allocate a contiguous file, तो मतलब जितने भी blocks free waste हो रहे हैं, that whole thing is nothing but external fragmentation. So therefore, this scheme has external fragmentation also. Increasing the existing file size. Increasing the existing file size. What do you say about this? जो existing file है, आप उसे increase करना चाह रहे हो. Like I have file, for example, tr. You want to add another 4 blocks. Next 4 blocks should be contiguously free. अगर 4 blocks contiguously free ना हो, तो आप increase नहीं कर सकते file. तो यहाँ पर हम बोलेंगे increasing existing file size के लिए, this is slightly inflexible. I don't say it is impossible, but inflexible. आपने relocate करना होगा file को दूसरे area पर.
तो वो प्रॉब्लम होगा, राइट. सो देयरफॉर मे और मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल. नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेस देखिएगा, कंटिग्यूअस है तो कंटिग्यूअस एक्सेस विल ऑलवेज सपोर्ट, कंटिग्यूअस एलोकेशन विल ऑलवेज सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस. डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से ये फास्टर एक्सेस होगा, इज फास्टर. So these are the performance issues of contiguous allocation. तो अगर आप इन इश्यूज के प्रॉब्लम जो है लाइक इंटरनल फ्रैगमेंटेशन है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द फाइल साइज, अगर ये प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करना चाहो देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट एलोकेशन टेक्निक कॉल्ड लिंक्ड एलोकेशन. लिंक्ड एलोकेशन या नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन. ठीक है, लिंक्ड एलोकेशन या नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन. या फिर आप बोलो नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन. नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन. चलिए देखेंगे कैसे वर्क करेगा. So I have a file by name Jeep starting from block number 9 and then ending block. So block 9 is pointing to next block, 16 is pointing to next block, next block, next block, ultimately a last block at 25. So this is our linked allocation. So that means यहां पर हम एक real linked list create कर रहे हैं among the blocks which are in use by the file, which are in use by the file. We are really creating a linked list, clearly creating a linked list of blocks which are in use by the file. तो इसके इश्यूज क्या बनेंगे यहां पर? व्हाट आर द इश्यूज ऑफ दिस अप्रोच? इश्यूज, कैन वी हैव इंटरनल फ्रैगमेंटेशन? यस, लास्ट ब्लॉक में नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड, वी कैन हैव. लेकिन क्या यहां पर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होगा? कभी भी नहीं होगा. इंक्रीजिंग फाइल साइज के बारे में क्या बोलोगे आप? इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल एज लॉन्ग एज फ्री ब्लॉक्स आर अवेलेबल. जब भी आपके पास फ्री ब्लॉक्स होंगे तो आप हमेशा एग्जिस्टिंग फाइल साइज को इंक्रीज कर पाओगे. इट इज ऑलवेज पॉसिबल एज लॉन्ग एज फ्री ब्लॉक्स आर अवेलेबल. लेकिन टाइप ऑफ एक्सेस जो है ना यहां पर वो होगा टाइप ऑफ एक्सेस ओनली सीक्वेंशियल, क्योंकि लिंक लिस्ट है. लिंक लिस्ट कैन नॉट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस, ओनली सीक्वेंशियल. Only sequential. So type of access will be only sequential. Yes, direct access is also called random access. That is correct. And there is another problem here. We say pointers consume disk space. That is another problem. Links or pointers consume disk space. मतलब some of the disk space will be eaten away by pointers. और दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर पॉइंटर की लिंक, ये लिंक जो है, पॉइंटर जो है, if any pointer or link breaks, the file gets truncated. तो वो भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर. So that is second approach of linked allocation. इन दोनों को अगर कंबाइन करें, contiguous allocation and linked allocation को अगर आप कंबाइन करोगे, then we come across the third approach of allocation, the third method that is called index allocation. Index allocation. Index allocation. ठीक है. सो इंडेक्स एलोकेशन की आइडियोलॉजी क्या है या इंडेक्स एलोकेशन की फिलॉसफी क्या है यहां पर लिखेंगे बच्चों. इंडेक्स एलोकेशन की फिलॉसफी यह है कि ईच फाइल is associated with an index block. Next point, index block holds the addresses of data blocks. The addresses of data blocks. Addresses of data blocks.
देखिएगा यहां पर there is a file by name Jeep, index block number 19. There is a block by number 19 which is the index block for this file. So what will this index block contain? ये है index block 19. It is containing addresses of data blocks. These are all addresses. First block in use is block 9, next block 16, next block 1. देखिएगा वही pointers बता रहा है. This block number 19, 9, 10, 16 and so on. So many. तो यहां पर एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं. वो ये है कि सपोज इफ आई गिव यू डिस्क ब्लॉक साइज एज 1 KB, डिस्क ब्लॉक एड्रेस इज इक्वल टू 16 बिट्स. 16 बिट्स मतलब कितने बाइट्स हुआ? 2 बाइट्स. तो मतलब हम यहां कैलकुलेट करना होगा एक इंडेक्स ब्लॉक में आप कितने एड्रेसेस स्टोर कर पाओगे. नंबर ऑफ एड्रेसेस विच कैन बी स्टोर्ड is equal to 1 KB divided by 2 bytes, 512. तो एक ब्लॉक में you can store 512 addresses. ठीक है ना. Each address point to one block of size 1 KB. देखिएगा ब्लॉक 9 है of that contain data of size 1 KB. ये ब्लॉक 16 है that contain data of size 1 KB. तो मतलब कितने एड्रेसेस स्टोर कर पा रहे हो आप? 512. तो कितनी फाइल साइज आप एक्सेस कर सकते हो? 512 इंटू 1 KB इंटू 1 KB, तो मतलब 512 KB. You can access a file of size 512 KB with one index block. अगर आपकी फाइल साइज 512 KB से बढ़ के है तो आप क्या करोगे? 2 इंडेक्स ब्लॉक लोगे. You can make a sort of linked list of index blocks. ये है इंडेक्स एलोकेशन. तो बच्चों मुझे कहना यह है कि एनी फाइल सिस्टम और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विल हैव टू यूज आइदर कॉन्टिग्युअस और लिंक्ड और इंडेक्स एलोकेशन. देयर इज नो एस्केप. और दे विल हैव टू यूज अ वेरिएशन ऑफ दीज 3 अप्रोचेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज अ वेरिएशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन दैट इज कॉल्ड inode. ये है देखिए inode स्ट्रक्चर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिक्स inode स्ट्रक्चर. Unix inode structure. Very important. Many questions, many problems were asked in earlier papers on Unix inode structure. The file control block in Unix is called inode. The file control block in Unix is called inode, Unix or Linux. The inode will contain attributes of the file along with data block information. ये इस तरीके से आपको inode स्ट्रक्चर रहेगा. सो फर्स्ट पार्ट विल कंटेन व्हाट आर कॉल्ड जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल रहेंगे, लाइक मोड ऑफ फाइल, ओनर्स ऑफ फाइल, टाइम स्टैम्प, साइज ऑफ ब्लॉक एंड सो ऑन. इसके बाद आपका डेटा इंफॉर्मेशन आएगा. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. अगर आप कहो तो मैं यहां पर बिल्कुल एक स्टार मार्क कर दूंगा. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, so follow carefully. Yes. So now I have direct blocks, single indirect, double indirect, triple indirect, like that it goes. तो समझेंगे यहाँ पर. We'll follow the same concept. Say for example, disk block size is 1 KB and disk block address is say 16 bits. 16 bits मतलब 2 bytes. तो one block can store 512 addresses like earlier occasion. तो यहां पर देखिएगा डायरेक्ट ब्लॉक्स मतलब वी आर गोइंग टू स्टोर एड्रेसेस ऑफ दोज डेटा ब्लॉक्स दैट आर कंटेनिंग डेटा ऑफ द फाइल, दोज एड्रेसेस दैट कंटेन डायरेक्टली डेटा ऑफ द फाइल. सो ईच ऑफ दिस इज 1 KB डेटा ब्लॉक, 1 KB डेटा ब्लॉक. तो मतलब अगर मान लीजिए यू आर स्टोरिंग सम 10 एड्रेसेस हियर, मतलब योर फाइल कैन ग्रो अप टू 10 KB. योर फाइल कैन ग्रो अप टू 10 KB if I have 10 direct disk block addresses. One address block 1 KB, second address block second 1 KB, third 1 KB, 10 KB. अगर आपकी फाइल साइज इज विद इन 10 KB, दिस विल बी सफिशिएंट. लेकिन मान इफ यू इमेजिन कि आपकी फाइल साइज इज मोर देन 10 KB, देन वी हैव यूजिंग अ कांसेप्ट ऑफ सिंगल इनडायरेक्ट. तो यहां पर आपको देखना होगा, हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, इट इज नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. मतलब दिस इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ ए ब्लॉक आई which in turn is holding the addresses of data blocks, One index block holding addresses of data blocks. हमारा index block number of addresses which can store are 512.
तो 512 एड्रेसेस इट कैन स्टोर हियर, ईच पॉइंटिंग टू ब्लॉक ऑफ साइज 1 KB। तो टोटल फाइल साइज हमारी कितने बनेगी 512 KB। पहले कितनी एक्सेसिबिलिटी थी 10 KB डायरेक्ट से 10 KB एंड नाउ 522 KB हमारी फाइल साइज बनेगी। मतलब हमारी फाइल साइज 522 KB तक अगर रहेगी तो यहां तक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल साइज इज मोर देन 522 KB, ये लॉजिकली हम कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट लेवल पर, डबल इनडायरेक्ट, डबल पॉइंटर टू पॉइंटर। दिस वाज ओनली सिंगल पॉइंटर, दिस डायरेक्ट वेरिएबल, सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर। फर्स्ट लेवल इंडेक्स ब्लॉक, फर्स्ट लेवल, each of them will point to second level index block। डेटाबेसेस में आपने पढ़ा होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, मल्टी इंडेक्स कॉन्सेप्ट इन डेटाबेसेस। So here I can have 512 addresses, each of them pointing to one 512 entry, each of size 1 KB। तो मतलब आपकी टोटल फाइल साइज यहां पर कितने बनेगी 512 into 512 into 1 KB, डबल इनडायरेक्ट। कैसे 512 addresses, each of them will point to 512 KB, so 512 addresses into 512 KB, as simple as that। तो ये जो बनेगी आपकी 2 power 9, 2 power 9, 2 power 18, 2 power 28, 256 MB रहेगी, 256 MB is to 522 KB। so therefore आपकी फाइल साइज मैक्सिमम हो पाएगी 256.5 MB। इतनी फाइल साइज आप ग्रो कर सकते हो अप टू डबल इनडायरेक्ट DBA, अप टू डबल इनडायरेक्ट DBA। यह है कॉन्सेप्ट inode। ठीक है, उसी तरह एक वेरिएशन कॉन्सेप्ट है फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ DOS और विंडोज, वहां पर फाइल एलोकेशन टेबल का कॉन्सेप्ट होगा, वो भी आप पढ़ सकते हो, मेरे रेगुलर कोर्स में देख सकते हो आप, फाइल एलोकेशन टेबल का कॉन्सेप्ट वहां पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए इससे पहले कि प्रॉब्लम्स ले हम, we will also talk about briefly in short about free space management, disk free space management, how to keep track of what are the standard algorithms for managing the disk free space। say for example if I have a disk of some size D bytes, if I have disk block size of some X bytes, and if I have disk block address of some D bits। ठीक है, so here our inherent assumption will be what, based on these three parameters, the value of D will be less than or equal to 2 power D into X। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। Given disk size will always be less than or equal to maximum possible, this is my maximum possible, 2 power D into X। so given disk size D is always less than or equal to 2 power D into X। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डिस्क इज इक्वल टू डिस्क साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। so this will give you the number of blocks, this will give you number of blocks, this will give you number of blocks। so initially all these blocks are free, ये जितने भी है पूरे फ्री रहेंगे। जितने भी ब्लॉक्स है सारे के सारे फ्री हैं। तो हमने यहां पर ये देखना है कि हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज, कि हम कैसे मैनेज करेंगे फ्री ब्लॉक्स, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, ये हमें देखना होगा। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है फॉर मैनेजिंग द डिस्क स्पेस, यहां पर लिखेंगे हम, फर्स्ट इज कॉल्ड फ्री लिंक लिस्ट। फ्री लिंक लिस्ट, अंकुर द्विवेदी, अंकुर द्विवेदी कह रहे हैं, हिंदी में पढ़ाइए सर। देखिएगा बच्चों, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में मतलब 30% हिंदी रहेगी, 70% इंग्लिश रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही मेरे अपने लेक्चर में कहा था, फिर एक बार चूंकि लास्ट लेक्चर है आपको कह रहा हूँ कि हिंदी में पढ़ाना मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगा बाद में, अब नहीं। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको होगा गेट एग्जाम में, क्योंकि आपका गेट का पेपर
गेट का पेपर हिंदी में नहीं आएगा, गेट का पेपर सारा का सारा इंग्लिश में आएगा। अगर कोई दुविधा हो रही है इंग्लिश समझने में, तो फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप गेट का पेपर कैसे समझोगे, क्वेश्चंस कैसा अंडरस्टैंड करोगे और कैसे सॉल्व करोगे। मुझे पता है, हो सकता है आप हिंदी मीडियम से हो, ऐसे कई बच्चे होंगे, लेकिन पहले जिस तरह मैंने अपील की, फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, आपको ये मेरा एडवाइस है, सुझाव है, प्लीज़ आप गलत मत समझिएगा कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रांचेस जो हम बोलते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ओरिएंटेशन इंग्लिश में कीजिएगा, क्योंकि आपने कल मतलब फ्यूचर में आपने मल्टीनेशनल कंपनीज या आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज में काम करना है। आपको बाहर जाना पड़ेगा, आउटसाइड कंट्रीज विजिट करना पड़ेगा, जहाँ की लैंग्वेज आपको इंग्लिश में होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इंग्लिश इम्प्रूव करो और इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मेरी आपसे अपील है, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट इन योर ओन इंटरेस्ट। आई एम टेलिंग यू, मेरे जैसा मैं आपको कहा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में पढ़ना, हिंदी में बोलना, हिंदी में बात करना, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए मैं कह रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह कोशिश कीजिएगा अपने आप को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, जो भी टाइम है, आप अपने आप को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिएगा प्लीज़। एंड यू ट्राई टू अटेंड द लेक्चर्स इन इंग्लिश फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर योर ओन एडवांटेज। ओके, चलिए। सो फ्री लिंक लिस्ट, तो यहां पर हम क्या करेंगे फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच में? वी आर गोइंग टू चेन अप, वी आर गोइंग टू लिंक अप ऑल द फ्री ब्लॉक्स। जितने भी फ्री ब्लॉक्स होंगे हम उसे चेन कर लेंगे, यहां पर एक लिंक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स। तो सपोज इफ आई वांट ए फाइल विथ 3 ब्लॉक्स, यहां से हम 3 ब्लॉक्स डिलीट करेंगे, दे देंगे। इफ आई फाइल वांट 10 ब्लॉक्स, यहां से 10 ब्लॉक डिलीट करें, दे देंगे। फ्री लिंक लिस्ट। सेकेंड एल्गोरिथम जो है बच्चों, विथ रिगार्ड टू फ्री लिस्ट मैनेजमेंट, इज कॉल्ड फ्री लिस्ट। मतलब यहां पर भी एक लिंक लिस्ट होगी, लेकिन लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स नहीं होगी, बट लिंक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग एड्रेसेस ऑफ फ्री ब्लॉक्स। सुनिएगा, गौर से समझिएगा, यहां पर एड्रेसेस ऑफ फ्री ब्लॉक्स रहेंगे। ऑल फ्री ब्लॉक जितने भी है, यहां पर एड्रेसेस हम स्टोर कर लेंगे। ये है लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स। लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स, ब्लॉक्स कंटेनिंग एड्रेसेस ऑफ फ्री ब्लॉक्स। लिंक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स कंटेनिंग एड्रेसेस ऑफ फ्री ब्लॉक्स, ये है फ्री लिस्ट। संकेत सर्वे, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर एंड यू हैव नॉट डन ऑपरेटिंग सिस्टम अर्लियर, तो आप ये समझ नहीं सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, द थर्ड मैकेनिज्म, द थर्ड अप्रोच, थर्ड एल्गोरिथम इज बिटमैप। बिटमैप, तो बिटमैप के लिए एक 1 लाइन स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहां पर। ईच ब्लॉक is associated with a bit, binary bit, that can take 2 values, 0 or 1. 0 का मतलब है ब्लॉक इज फ्री, 1 का मतलब है ब्लॉक इन यूज। इस तरह हर ब्लॉक का स्टेटस आप मॉनिटर करोगे, वेदर ब्लॉक इज इन यूज और ब्लॉक इज फ्री। आपका बिटमैप फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली में लुक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये है आपका बिटमैप। मतलब दिस इज द ब्लॉक इंडिकेटिंग द स्टेटस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, लाइक दैट। फर्स्ट ब्लॉक इन यूज, सेकंड इज फ्री, थर्ड इन यूज, फोर्थ इज फ्री, इस तरीके से। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये है इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो दिस इज अबाउट दिस इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स, एलोकेशन मेथड्स एंड फ्री स्पेस मैनेजमेंट। लास्ट पार्ट है डिस्क शेड्यूलिंग, वो थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, सो दैट यू कैन फील सम कंफर्ट लेवल। चलिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे रीड कीजिएगा एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, इसका आंसर बताइए।
I'm sure you are working this. Yes, the bitmap itself become the overhead. Clever Phoenix. The bitmap itself is overhead. Bitmap is going to be stored on disk in the form of blocks. ठीक है ना? अब जो bitmap है आप disk पे store करोगे in the form of blocks. That itself is the overhead on disk. चलिए next. ये understand करेंगे question. How long does it take to load a 64 kilobyte program from a disk whose average seek time is 30 milliseconds, rotation time is 20 milliseconds, track size is 32 kilobytes, page size is 4 kilobytes. Assume that pages of the program are distributed randomly around the disk. चलिए पहला पार्ट ये वर्कआउट करेंगे. So मतलब ये है, we are given a disk. यहां पर एक डिस्क है. Let's imagine this is our disk. ये डिस्क पर एक प्रोग्राम है जो stored है on the disk in the form of pages randomly distributed around the disk. इस तरीके से प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये टोटल प्रोग्राम की साइज दी गई है प्रॉब्लम में 64 KB और पेज साइज है 4 KB. मतलब नंबर ऑफ पेजेस स्ट्रेट अवे बनेंगे 64/4 मतलब 16 पेजेस. The program is in the form of 16 pages on disk. तो हमें कैलकुलेट करना है if average seek time of the disk is 30 millisecond, rotation time 10 millisecond, कितना टाइम लगेगा हमें लोड करने के लिए, प्रोग्राम ऑफ 16 पेजेस लोड करने के लिए कितना टाइम लगेगा. How much time does it need to load all these 16 pages from disk to memory? तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन. टाइम टू लोड द प्रोग्राम, time to load program is equal to time to load a page, एक पेज लोड करने के लिए, multiplied by number of pages. एक पेज लोड करने के लिए आपने लगेगा seek time, latency and transfer, is it not? So यहां पे लिखेंगे time to load a page. सीक टाइम है 30 मिलीसेकेंड्स, लेटेंसी इज R/2, 20/2, 10 मिलीसेकेंड्स. ट्रांसफर टाइम हमें यहां पे कैलकुलेट करना होगा. लेट अस कैलकुलेट इट. ट्रैक साइज इज 32 KB. 32 किलोबाइट्स ऑफ डेटा इज रीडेबल इन 20 मिलीसेकेंड्स. यहां से एक 4 KB पेज रीड करना पड़ेगा. कितना टाइम लगेगा? 4/32 into 20, क्योंकि किलो कैंसिल होगा. दिस इज 8, दिस इज 2.5. So therefore 2.5 milliseconds. This is the boys and girls, 42.5 is the time to load one page. एक पेज लोड करने के लिए आपको जो टाइम लगेगा 42.5 milliseconds. Straight away time to load the program is number of pages. Time to load one page 42.5. 42.5 multiplied by number of pages 16. ये है आपका आंसर. 42.5 into 16. देखेंगे कितना होगा. $680. ये बनेगा 680 मिलीसेकेंड्स. मतलब अगर सेकेंड्स में देखो 0.68 सेकेंड्स, less than 1 second is needed to load the program. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, एटलीस्ट आंसर दीजिएगा इसका. एमसीक्यू क्वेश्चन है. इट इज नॉट एमसीक्यू, एमएसक्यू है. रीड इट एंड लेट मी नो द आंसर. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गेट क्वेश्चन, पीवाईक्यू है.
Come on, what is the answer for this? B. Many people are saying this is an MSQ, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा बच्चे। Okay, what is the answer? Let us understand. देखेंगे, there is a linear list based directory implementation in a file system. Each directory is a list of nodes where each node contains the file name along with the file metadata, such as list of pointers to the data blocks. Consider a given directory by name foo. Foo एक name है directory का. Which of the following operations will necessarily require, necessary मतलब compulsory, require a full scan, मतलब पूरी डायरेक्टरी स्कैन करना पड़ेगा ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देखिएगा, ओपनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन फू। देखिए, लेट्स से दिस इज माय डायरेक्टरी, दीज आर द फाइल नेम, सम फाइल्स, ये फाइल्स है, ये फाइल्स है। तो मतलब फुल स्कैन कौन से ऑपरेशन, इफ आई वांट टू ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल एफ, तो जैसे ही मैं सर्च करते हुए फाइल पे आऊंगा, आई विल डायरेक्टली ओपन द फाइल, मुझे दूसरे एंट्रीज पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। इज इट नॉट? आई डोंट नीड द फुल स्कैन, जहां पर भी मुझे फाइल मिल जाएगी वहीं से मैं ओपन कर लूंगा उसे, मुझे दूसरे एंट्रीज पे जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस डज नॉट रिक्वायर ए फुल स्कैन। क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल, देखिएगा ये ऑलरेडी फाइल्स एग्जिस्टिंग है, इन दिस आई वांट टू क्रिएट ए फाइल, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है एक्स, मुझे ये देखना होगा कि दैट फाइल एक्स डज नॉट हैव द सेम नेम विच अदर फाइल्स हैव, तो उसके लिए मुझे सारे एंट्रीज चेक करने होंगे, मुझे सारी डायरेक्टरी सर्च करना पड़ेगा, पूरी फुल स्कैन लगेगा। ऑप्शन बी। रीनेमिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, एक एग्जिस्टिंग फाइल है एक्स, उसे आप रीनेम करना चाह रहे हो, तो मुझे देखना होगा कि जो नया नेम हम दे रहे हैं फाइल को, दैट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर नेम, तो उसके लिए मुझे फिर से पूरा फाइल स्कैन करना पड़ेगा, पूरा डायरेक्टरी स्कैन करना पड़ेगा, तो दिस ऑल्सो रिक्वायर। उसी तरह डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर ये फाइल आप डिलीट करना हो तो आप यहां पे जैसा आ जाओगे, डायरेक्टली यू डिलीट इट, या आप डिलीट कर दीजिए, आई डोंट नीड टू सर्च फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइल, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। वेरी सिंपल, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बता दीजिएगा बच्चों, थियोरेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कौन से मेथड्स में आएगा? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कॉन्टिग्यूअस और लिंक्ड और इंडेक्स में कौन से मेथड में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आएगा? सॉरी, इफ नो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इज अलाउड इन अ फाइल एलोकेशन सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन स्कीम्स कैन बी यूज्ड? अगर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नहीं होना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is the answer for this? Yes, that's right. Contiguous allocation will have external fragmentation. It will have. Linked will never have external fragmentation. Index also will never have external fragmentation. मतलब हम ये दो यूज कर सकते हैं, आंसर बनेगा डी, करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज, एवरीबडी वर्कआउट, दीज आर ऑल PYQs, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रॉब्लम की। इसका आंसर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल आइनोड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, यहां पर जो अभी हमने
क्लास में डिस्कस किया, निशु कुमार में भी आपने लेट ज्वाइन किया, देखिएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आई नोट का कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया है, देखिएगा स्लाइड में। ये आई नोट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, करिए, कीजिएगा प्लीज, सॉल्व द प्रॉब्लम। सक्षम, हाउ कैन फाइल साइज बी इन बिट्स? फाइल साइज बिट्स में नहीं होगा बेटा। अगर आप 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स, 8 बाइट्स की फाइल होगी क्या? पॉसिबल है? वो इम्पॉसिबल है। वो आंसर जो आप दे रहे हो वो गलत है। ठीक है, वर्कआउट कीजिएगा, ठीक है, वर्कआउट कीजिएगा, नो प्रॉब्लम सक्षम, डू इट। थैंक यू एसबी। हाँ, दिस ब्लॉक एड्रेस विल बी 8 बाइट्स। वो बात सही है सक्षम, दैट इज करेक्ट। यस, दिस ब्लॉक एड्रेस इज 8 बाइट्स, बिल्कुल सही बात है। सक्षम, हाउ मच इज आंसर? क्योंकि वो एक हार्ट के सिंबल के ऊपर आपका आंसर छुप गया है। फिर से एक बार लिखिए और थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा और एक बार मैसेज लिखिएगा सक्षम, क्योंकि आपका जो आंसर है वो हार्ट सिंबल के पीछे छुप गया है। टू GB है, ओके फाइन, ठीक है। निशु कुमार इज ऑल्सो 2 GB, ओके फाइन, ठीक है। अब हम वर्कआउट करेंगे यहां पर और चेक करेंगे वेदर 2 GB इज करेक्ट और इनकरेक्ट। देखिएगा प्लीज।
8 direct disk block addresses, 3 indirect disk block addresses, namely single, double, triple, and disk block size is 1 KB, can hold 128 disk block addresses. मतलब number of disk block address की size क्या रहेगी? disk block address की size रहेगी block size 1 KB divided by 128. So this will give you an answer. 2 power 10 by 2 power 7, 2 power 3 मतलब 8 bytes, मतलब 64 bits. ये disk block address. चलिए, so the file size जो बनेगी आपकी 8 direct addresses है, 8 into 1 KB. सिंगल इनडायरेक्ट से बनेंगे 128 into 1 KB. डबल इनडायरेक्ट से बन पाएगी साइज 128 into 128 KB. ट्रिपल इनडायरेक्ट से बनेगी 128 into 128 into 128 KB. ये है आपका आंसर. तो इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर है ना बच्चों, वो है ये. तो ये वैल्यू कितनी है हम असर्टेन करेंगे. This is 2 power 7, 2 power 7, 2 power 7, 2 power 21, 2 power 31, 2 GB. And significantly this 2 power 7, 2 power 7, 2 power 14, 2 power 24 है ये, 2 power 24, मतलब 16 MB. So 16 MB को अगर आप GB में कन्वर्ट करो, it will become 0.016 GB. तो काफी स्मॉल हो जाएगी वैल्यू. So रफली आप बोलोगे 2.01 GB. मैक्सिमम फाइल साइज इतनी बनेगी, 2.01 GB. ठीक है. टू 2.01 GB. ठीक है. तो साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक एड्रेस ये अभी हमने निकाला, 8 बाइट्स है, 64 बिट्स. क्वेश्चन इज दिस फाइल साइज पॉसिबल ओवर द गिवन डिस्क. गिवन डिस्क साइज कितनी है बच्चों? गिवन डिस्क साइज आपकी बनेगी नंबर ऑफ ब्लॉक 64, 2 power 64 इनटू ब्लॉक साइज 1 KB. ये आपकी मैक्सिमम डिस्क साइज है. ये डिस्क साइज पर ये आप आसानी से 2 GB स्टोर कर सकते हो. तो इसका आंसर बनेगा यस, इट्स पॉसिबल. यू कैन ऑलवेज स्टोर, क्योंकि डिस्क साइज काफी बड़ी है. फाइल साइज इज ओनली 2 GB. ये काफी बड़ी डिस्क साइज है. सो इट इज यस, यू कैन स्टोर इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. अगेन ए रिपीटेशन, एक रिपीटेशन है क्वेश्चन. प्लीज टेल मी द आंसर अगेन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस वर्कआउट कीजिए. Yes, they will specify in the question section how you have to express the answer. Based on that, you can do it. कितना आएगा इसका आंसर? वन के 4 GB. चलिए, द इंडेक्स नोड ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम हैज 12 डायरेक्ट, 1 सिंगल इनडायरेक्ट एंड 1 डबल इनडायरेक्ट. Disk block size is 4 KB and the disk block address is 32 bits, मतलब 4 bytes. So number of addresses which one block can store 4 KB,
4 KB डिवाइडेड बाय 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1K एड्रेसेस। चलिए फाइल साइज कैलकुलेट करेंगे। 12 डायरेक्ट, सो 12 इंटू 1 KB, 12 इंटू 1 KB प्लस सिंगल इनडायरेक्ट 1K इंटू 4, सॉरी ये 4 KB है, 1K इंटू 4 KB सिंगल इनडायरेक्ट। डबल इनडायरेक्ट से आपकी बनेगी साइज 1K इंटू 1K इंटू 4 KB इंटू 4 KB। ये जो फैक्टर है ना, इसकी वैल्यू बनेगी 2 पावर 10 20 30 34, 2 पावर 34 मतलब 16 GB। ये जो वैल्यू है 2 पावर 4 16 MB, ठीक है। 16 MB इज अगेन 0.16 GB, 0.016 GB। So this is roughly 16.01 GB. Is it not? Block size is 4 KB. Saksham, check it where you have gone wrong. चेक कर लीजिएगा आंसर, कहां पे आपने मिस्टेक की हो। आई एम सॉरी, अच्छा दिस इज 12, यहां मिस्टेक है। टू पावर 32 4 GB, so it's 4.016, 4.01 GB। That's right। चलो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और एक भी एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, वो ले लेंगे फिर दूसरा देखेंगे। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन है, हाँ इसका आंसर दीजिएगा। मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइसेस है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा प्लीज। Disk block size is for 128 bytes, disk block address is 8 bytes, मतलब एक ब्लॉक में 128 by 8, 8 1 8, 8 6 48, मतलब 16 एड्रेसेस कैन बी स्टोर्ड, 16 एड्रेसेस। तो आपका आंसर कितना बनेगा? 8 डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस, 8 इंटू 128 bytes plus 16 addresses into 128, single indirect, double indirect, 16 into 16 into 128 bytes, these bytes। ये है आपका आंसर। वर्कआउट एंड टेल व्हाट इज दैट। 8 into 128 is 1 KB, 2 power 3 2 power 7 is 1 KB, 2 power 4 2 power 7 2 KB, ठीक है। एंड दिस विल बी 2 power 4 2 power 4 16, 2 power 8, राइट, 8 and 7 15, 2 power 15 32 KB। सो आंसर 35 KB, ऑप्शन बी। 32 नहीं 35 KB होगा, निशु कुमार। ये है आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड 35 KB। चलिए थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर बोलिएगा प्लीज। The data blocks of a very large file in the Unix file system are allocated using which approach? Contiguous या linked या indexed या फिर extension of index allocation। जनरली ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहां पर ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। बोलिए।
What is the answer? Is it in the case of Unix operating system, it is inode structure. Inode structure is not exactly index, it is extension of index allocation. So सही आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. इट इज नॉट इंडेक्स्ड. इंडेक्स मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर है. ये मल्टी लेवल इंडेक्स है. मल्टी लेवल एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स allocation मीन मल्टी लेवल. Single indirect, double indirect, triple indirect, that is multi level index allocation. So therefore correct answer is D. Next question. ठीक है ना? इसका आंसर बताइए प्लीज. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्लीज. Using a larger block size in a fixed block size file system leads to what? अगर ब्लॉक साइज आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? ब्लॉक साइज बढ़ाने से इंटरनल फ्रैगमेंटेशन बढ़ेगा, मतलब वेस्टेज ऑफ स्पेस होगी, मतलब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, पुअर डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन. मतलब बेटर ये तो चले गया ऑप्शन, बेटर डिस्क यूटिलाइजेशन ये भी चले गया ऑप्शन. पुअर डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन मतलब आइदर इट हैज टू बी ए और डी. लेकिन ब्लॉक साइज बड़ी होने से एक डिस्क एक्सेस से यू कैन रीड मोर अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब थ्रूपुट विल इंक्रीज. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए. बेटर डिस्क थ्रूपुट एंड पुअर डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन. ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इसका आंसर बोलिएगा. वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है अलॉन्ग विद डिस्क. The amount of disk space that must be available for page storage. Page storage का मतलब डिस्क स्टोरेज, जहां पर आप पेजेस स्टोर कर रहे हो, डिस्क, is related to maximum number of process and the number of bytes in virtual address space B and the number of bytes in RAM. Given expression for the worst case disk space. देखिएगा हर प्रोसेस का virtual address space should get mapped onto disk. Every process virtual address space should get mapped onto disk. तो मतलब एक प्रोसेस का एड्रेस स्पेस है B virtual address space. So virtual address space size is B bytes. तो n प्रोसेसेस के साइज कितना होगा? n प्रोसेसेस का साइज, टोटल प्रोसेस साइज डिस्क स्पेस कितना होगा? टोटल वर्चुअल एड्रेस स्पेस बनेगा नंबर ऑफ प्रोसेसेस मल्टीप्लाइड बाय वर्चुअल एड्रेस स्पेस साइज. तो मतलब ये इतनी आपकी मिनिमम डिस्क स्पेस होना चाहिए. So therefore the allowable disk space maximum should be n into B. It has no correlation bytes. It has no correlation with RAM size. RAM का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर. So that is the answer for the problem. ठीक है. लास्ट में आपको ये बताना है, लास्ट टॉपिक जो है, जो मैं चाह रहा हूं कि आप पढ़ लो, that is nothing but disk scheduling. Disk scheduling. ठीक है. Again, an important topic. Some people even call it as IO scheduling. Some people even call it as IO scheduling. Input output scheduling. Some people call it as IO scheduling also. यहां पर मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताना है, व्हाट इज द नीड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग, हम वो डिस्कस करेंगे. और फिर आपको सिर्फ बताता चलूं कि व्हाट आर द वेरियस डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स. व्हाट आर द वेरियस डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स. तो दिस इज आवर डिस्क एंड दिस इज द डिस्क क्यू.
So this is a ready queue, this is a CPU, and these are the processes PI, PJ, PK, PL, and this is our hypothetical disk. ठीक है? And here this is the disk queue, and here some processes are there waiting for their chance to perform their operation on this device. बिल्कुल आ सकता है, ठीक है? So whenever the CPU is idle, the short-term scheduler will have to select one process and get scheduled onto CPU. Short-term scheduler plus dispatcher यहाँ work करके they will schedule the process onto CPU. They will schedule the process onto CPU. ठीक है ना? So this is short-term scheduler and dispatcher. That is the role of short-term scheduler and dispatcher. Like for example, I have decided to run process PK. After running for some time, if this process needs to go for IO operation, we'll add the process onto this disk queue, for example. तो जैसे ही disk become idle, these are the awaiting processes to get themselves serviced onto the device. तो हमें decide करना होगा which process request should be served next, कौन से process की request हम serve करेंगे. तो जिस तरह यहाँ पर CPU scheduler है, short term scheduler है, CPU scheduler है, उसी तरह यहाँ पर एक disk scheduler वर्क करेगा. Disk scheduler या operating system device scheduler रन करेगा, deciding के which process IO request should be served next. ठीक है? It will decide using some parameter to decide which process IO request should be served next. So this is called IO scheduling. This is called IO scheduling. ये CPU scheduling है, ये IO scheduling. जिस तरह यहाँ criteria से arrival time and other thing, right? That arrival time है, time quantum है, priority है, burst time है, उसी तरह यहाँ पर भी डिस्क के बेसिस पर पैरामीटर्स रहेंगे और वो पैरामीटर्स से हम डिसाइड करेंगे. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक शायद आपने जो पढ़ा होगा, डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स यहाँ पे जिस एन्यूमरेट करूंगा मैं, हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी 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 सिंपल टॉपिक. आप गैल्विन के टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो इफ यू हैव नॉट स्टडीड. लाइक फर्स्ट यू हैव द नेचुरल अप्रोच, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अदरवाइज यू हैव अदर अप्रोचेस लाइक शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF. Then you have other algorithms like scan, or you can have loop, or you can have circular scan, or you can have the last one circular loop. तो बच्चों ये 6 शेड्यूलिंग टेक्निक्स है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले कई आ चुके हैं और आप बाद में अब देख सकते हो फ्रॉम द गैल्विन टेक्स्ट बुक. थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टेक सम PYQs एंड डू द प्रैक्टिस. दे आर वेरी वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, अनलाइक CPU शेड्यूलिंग. ये काफी सिंपल प्रॉब्लम्स है. So boys and girls, this completes the discussion on all the topics in a fast track mode or maybe crash mode. We did our level best with an intention to justify the purpose of revising the syllabus. Of course, this is not a full-fledged coverage. अगर कोई operating system right from scratch ये course से करना है तो that's impossible, वो नहीं हो सकता. So this is just a revision roadmap or maybe helping facilitating your revision process, the purpose of fast track course. So if you have any questions to ask, anything, any doubts, any clarification, you can do so because this is the last session. So अगर कुछ पूछना चाहो आप with regard to your preparation, with regard to the subject, with regard to academics, तो आप पूछ सकते हो. At any point of time in future, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में मैंने अपने स्लाइड्स पे दिया था, you can join the Telegram group and then there also you can ask the doubts or seek clarification. देखिएगा, fork system call is basically used for creating child process. निशु कुमार, there is nothing like important questions. ऐसा कोई नहीं है important, कोई भी नहीं करा सकता important questions. हाँ, PYQs आप 1-2 iterations में कर लीजिएगा. पिछले साल हमने कुछ PYQ सीरीज लाए थे, आप वहां से देख सकते हो PYQ सीरीज, राइट. सो PYQ देखिएगा आप, दैट इज इंपॉर्टेंट. फोर्क के लिए देखिए आप रक्षित, आई वुड सजेस्ट लास्ट ईयर का जो मेरा क्रैश कोर्स था, आप वहां पे देखिए, वीडियो शायद अवेलेबल है फोर्क के ऊपर. प्रॉब्लम्स भी है,
PYQs भी है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। हाँ देखिएगा, स्ट्रैटेजी मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए जनरल ओपिनियन मैं अपना ये दे रहा हूँ कि ऑफकोर्स गेट का प्रिपरेशन जो है आप सेल्फ कर सकते हो अपने तौर पर, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोचिंग और एनीथिंग लाइक दैट, राइट, अनलेस एंड अनटिल यू हैव स्टडीड एट योर कॉलेज लेवल वेरी वेल। अगर आपने कॉलेज लेवल पर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप सेल्फ कर सकते हो, देयर इज नो इशू, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन डू इट। लेकिन इफ यू बिलीव दैट यू हैव नॉट स्टडीड वेल एट योर कॉलेज लेवल, तो फिर आपने इट्स बेटर यू टेक some, you get coached, you get training, that is always better. Training के कई benefits है I would say, because experienced teachers, if they teach, then that will be really beneficial for you. You will get ample opportunity to work out with shortcuts and with good experience, etc. Okay, so PW पे काफ़ी affordable prices पे courses है, and that too very good erudite faculty is there in the platform, so you can definitely opt for it. हाँ देखिए, those who have already completed the subject and are doing revisions, you keep on revising at regular intervals of time, and also do a couple of more iterations of PYQs. PYQs के ऊपर फोकस कीजिएगा, रिवीजन पे फोकस कीजिएगा, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। Clever Phoenix, देखिए, that's what you have to practice it, because in the exam you have to work under time constraint, is it not? Under time constraint you have to work. और जनरली मैं ये कहता हूं कि स्ट्रैटेजी बोल के देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है लॉजिकली, आई वुड से बेस्ड ऑन एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन इंडिपेंडेंट अप्रोच ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस और मेथोडोलॉजी ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस। तो आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट अपनी ओन स्ट्रैटेजी बनाना है बेस्ड ऑन हाउ गुड यू आर एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन विच यू आर गुड एट। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है, वी कैन ओनली टेक इनपुट्स फ्रॉम पीपल लाइक अस, एंड देन यू हैव टू मेक अल्टीमेटली योर ओन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर पर्सनल traits and personal aspects. Okay. Any other thing? जितना हो सके मैक्सिमम एफर्ट डालीजिएगा बच्चों, बाकी के जो 45-50 डेज बाकी है गेट एग्जाम के लिए, एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पर डे आप कोशिश कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी है, जो भी टॉपिक्स में डिफिकल्टी है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा एंड ट्राई टू डू इट। Saksham, you divide your time and accordingly spend maximum time on those subjects in which you are facing difficulty, and then accordingly you can do it. टाइम को आप अपने मैनेज कीजिएगा। Like you say, 2 days this subject, remaining 2 days the other subject, इस तरीके से आप अपना एक प्लान बना के आप वर्कआउट करोगे, then I feel you won't feel the pressure. आप प्रेशर फील नहीं करोगे। Don't just try to get stuck with one subject. Okay. हाँ देखिए, कॉलेज के एग्जाम के साथ आपको मैनेज करना है, यही तो बड़ी बात है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि कई बच्चे ऐसा कर चुके हैं, आप सिर्फ आप पहले स्टूडेंट नहीं हैं, देयर आर मेनी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। लेट मी टेल यू, वन ऑफ माय कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वे बैक सम मे बी 15 years back, he got all India 1 rank from Hyderabad, ठीक है, इट्स पॉसिबल। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी सिंगल डिजिट रैंक ला चुके हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया था कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, सो इट्स पॉसिबल। Those people who have gap of 8 years, 10 years and preparing for GATE, they have got single digit rank, 2 digit rank. It's possible. हर चीज पॉसिबल है। अदर ब्रांच स्टूडेंट मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये बच्चे भी सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक लाए हैं। सो एवरीबडी हैज गॉट ए स्कोप इन कंप्यूटर साइंस, हर कोई कर सकता है। आप बिल्कुल इंटेलिजेंटली, स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है व्हेन यू आर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, ठीक है, 1 आध 2 प्लेसमेंट आप लेकर एज ए बैकअप रख लीजिएगा और ज्यादा फोकस अपना गेट के ऊपर कीजिएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड पर्सनली। और जैसे ही आपका गेट एग्जाम होगा, प्लेसमेंट्स आजकल काफी थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, मार्केट थोड़ा टाइट है, लेकिन इफ यू प्रिपेयर वेल देन आई एम वेरी श्योर यू डू इट, यू कैन डेफिनेटली गेट इट।
You can definitely get it. MTech के बाद from IIT, NIT, you don't have to worry about placements. Absolutely. You don't have to worry about it. आराम से मिल जाएगा. बट ये ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठो और कंपनी आ जाएगी. वहां पे भी आपको अपने स्किल्स डेवलप करना होगा अपने. एक्चुअली दैट इज वेरी ऑब्वियस. ऐसा नहीं है कि बस IIT में एडमिशन मिल गया, NIT में एडमिशन मिल गया, आपको प्लेसमेंट पक्का मिल जाएगा. ऐसा नहीं. यू हैव टू वर्क हार्ड देयर. यू हैव टू डेवलप, एक्वायर न्यू गुड स्किल्स. ओके, वेरी गुड. हाँ, देखिएगा, यू टारगेट अराउंड 60 to 65 मार्क्स टू बी ऑन सेफ साइड फॉर गेटिंग इनटू IITs. ठीक है. So after GATE exam, what should be the next? After GATE exam, your next approach should be, next approach or next thing that you should be focusing on is on coding, problem solving, right? Coding and problem solving. ये दो चीजों पर अपना फोकस रखिएगा. DSA के ऊपर काफी फोकस कीजिएगा. और जो बच्चे हिंदी स्पीकिंग है, इंग्लिश में वीक हैं, उनसे मेरी बार बार अपील है, मेरा ज्यादा फोकस उनके ऊपर होता है, तो प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन योर इंग्लिश. कोई कोर्स ज्वाइन कीजिएगा इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर ये तो पक्का कीजिएगा एक इंग्लिश पेपर सब्सक्राइब कीजिएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फिर डेली हैबिट बनाइए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इंग्लिश पेपर पढ़ के वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिएगा, स्पीकिंग स्किल इंप्रूव कीजिएगा. ये काफी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए. यस, मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा. 65 प्लस मार्क्स आने से मिल जाएगा. फरहान खान, DP इज वेरी इजी. डायनामिक प्रोग्रामिंग काफी इंपॉर्टेंट है. 2-3 बार मेरे लेक्चर्स वॉच कीजिएगा अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स. आई एम वेरी श्योर यू कैन गेट ए ग्रिप. और उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, टेस्टिमोनियल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द प्रेजेंट बैच ऑफ PW आल्सो, हु हैव सेड दैट सर इनिशियली वी फेल्ट DP इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बार बार हम लेक्चर्स देखें, देन इट गॉट क्लियर. 55 मार्क्स आई कैन नॉट से फॉर श्योर, लेकिन 65 प्लस इज डेफिनेट. निशु कुमार. ठीक है. एनीथिंग एल्स बच्चों? Any other question? Okay. So boys and girls, take care. Thank you so much for attending the course, those who are regular. So I bless you all. My blessings are there always with you, and I hope sincerely that you are going to fare very well in the forthcoming GATE exam and come out with flying colors. And I hope you enter the gate of IITs or NITs or your dream company. Yeah, we'll try to see that, Rakshit. ठीक है? We'll try to see. So thank you, बच्चों. Take care. Good night.